from fourth, that is partial reduction. What is the meaning of reduction? Reduction means addition of hydrogen. So if partial reduction takes place, that is with LiAlH4 or H plus ions reducing agent, then this forms CHOH. That is alcohol is formed. Okay, alcohol is formed. And if complete reduction, then in complete reduction, oxygen removed by hydrogen. So this is the two name reaction. Fifth and sixth are the very, very important name reaction. Yash Saxena, please note down. There's these two reactions. Clemmensen and Wolff-Kishner are very important, very, very important name reaction. Clemmensen and Wolff-Kishner. Okay, in Clemmensen सिर्फ name reaction है discuss कर रहे हैं. ZnHg and HCl, that is alkane is obtained. And I had remembered that 1 year. It is because अगर आप कोई सा भी दे देंगे, any compound, either it is from aliphatic carbonyl compound or aromatic carbonyl compound, and you are required to obtain CH2 group. CH2 group center में आ रहा है. In both the side R and H is present or RR, and then you will get ZnHgHCl is the best reagent, as it is a name reaction, also important for conversion. Next one, again Wolff-Kishner reaction. Wolff-Kishner reaction means NH2NH2, that is NH2NH2 means hydrogen, KOH and glycol. It again oxygen changes from removed by hydrogen. Now next one is Gattermann-Koch. दो नेम रिएक्शन सिमिलर हो गई हैं बेटा, एक तो गटरमैन रिएक्शन एंड गटरमैन-कोच रिएक्शन. व्हाट इज द डिफरेंस? इन गटरमैन रिएक्शन, दिस इज फॉर द formation of chlorobenzene or chlorobenzene, bromobenzene or cyanobenzene. That is, we use copper dust with HX. Yes, it is clear. ये अपन पहले कल डिस्कस कर चुके. Now what about Gattermann-Koch? Gattermann-Koch is the in benzene when treated with CO plus HCl in the presence of anhydrous AlCl3 or CuCl, it forms benzaldehyde. This is the electrophilic substitution reaction. अगर ऐसा कुछ भी पूछते हैं कि give an example in benzaldehyde, formation of benzaldehyde through electrophilic substitution reaction. So this is the best reaction. थोड़ा सा रिएक्शन को ट्विस्ट करके दे सकते हैं बेटा, और कुछ नहीं है. सो बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद CuHCl, व्हेन वी ट्रीटेड विद CuHCl एंड इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड. आदित्य, व्हिच इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा? CHO एंड Cl. CHO पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल. सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एंड इट गिव्स C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज Hell-Wohlard-Zelenski, HVZ. Halogenation है, always halogenation alpha H. Halogenation means alpha H from alkyl group. So alkyl group CH3, CH2, COH. Alpha H release होगा from alkyl group from CH2. If controlled condition, then only one hydrogen is replaced, and if excess of chlorine and bromine is present or further heating, both the two hydrogen replaced by halogen. This is known as Hell-Wohlard-Zelenski reaction. Here one important thing to note down, that this reaction is held in the presence of red phosphorus, not UV rays. Is it clear? Important to note that Cl2Br or any halogen, that is mainly basically Cl2 or Br, they react in the presence of red phosphorus. Now next, नाइन्थ रिएक्शन में फिर से कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स. यस आदित्य. नमस्कार मैम. मैम माय क्वेश्चन इज व्हाई रेड फास्फोरस ओनली? HNu is very helpful to producing फ्री रेडिकल. बहुत जल्दी प्रोड्यूस करेगा बेटा वो. ठीक है, यहाँ पे उतनी ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं चाहिए, सो कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू रेड फास्फोरस. दैट्स व्हाई वी यूज रेड फास्फोरस इन कंट्रोल्ड टेम्परेचर आल्सो. It is not required to write temperature, so we will only write the halogen and red phosphorus. Clear? Now next one is toluene. यहाँ पे दो comparison given है बेटा. If CrO3, that is Itard reaction, generally ये Itard नहीं है. Itard क्या था अपना? CrO2 Cl2 था.
It is also chromium oxide in the presence of anhydride. It gives benzaldehyde. But if Cl2H nu, what is the difference? Cl2H nu, then क्या होगा? Cl2H nu लोगे, साइड चेन में कन्वर्जन होगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, and further hydrolysis it gives benzaldehyde. There are the 3 reactions through which from toluene or from alkyl benzene we can prepare benzaldehyde. 3 reactions are, first one is, दो तो बोर्ड पे ही दिख रही हैं आपको बेटा स्क्रीन पे, Cl2H nu followed by hydrolysis. Second one is chromium oxide, again followed by hydrolysis, and third one is Itard reaction. Itard means chromyl through chromyl chloride. Now next one is from GR. This reaction is the main important reaction for the formation of only ketone. Students note it down. 10th number reaction is for the preparation, only very important preparation for the formation of ketone. Through this reaction, we can only prepare ketone, not aldehyde. So what happened? In first, RMgCl, that is GR, treated with CdCl2 ionic compound. XY question आ सकता है. GR when treated with any ionic compound X, so it is CdCl2. वही same charge replace हो रहा है. You know CD positive है. And in case of RMgX, मैंने क्लास में भी ये बताया था, दोबारा बता रही हूँ. In alkyl group generally is positively charged, but when it is bonded with matter, then it acquires negative charge. Then it acquires partial negative charge. So here R is negatively charged. It reacts with CD and gives R2CD and RMgCl2. Now next step, it reacts with acid halide and forms ketone. If R is CH3, then similar ketone, symmetrical ketone is obtained, and if R is different, then unsymmetrical ketone we can prepare through this method. Now, the next reaction is for the preparation of RMgX with RCN. Again charge बताते जा रही हूँ बेटा. अगर आपके पास आपने ये प्रिंट आउट निकाल लिया है तो आप चार्ज लगाते जाइएगा, असाइन करिए. R is negatively charged, Mg is positively charged. Here C is positively charged and negative charge. On C, R attach हो जाएगा, that is RC double bond N MgX. And after hydrolysis, as we already know, RMgX, when treated with double bond and triple bond compound, then hydrolysis takes place. Water release हो जाएगा and it gives ketone. So through RCN, we also obtain ketone. This reaction is again only for ketone and not for aldehyde. Any doubt? Aditya, Kunal, Harsh, Yash Bohra, Yash Saxena, any doubt? किसी को कोई doubt? Okay. मैम Yes. हाँ मैम एक बार फिर से चार्ज बताना. Okay. Charge मैं नहीं, अब मैं तुमसे ही पूछूंगी आदित्य. Okay. In RMgX, R is negative Minus. charge. Yes, ma'am. Minus. Okay. In CN, because here is double bond is present, pi bond, तो charge तो यहीं पे होगा, है ना? C कैसा होगा? C is positively charged and N is N कैसा charge होगा N पे बोलो? Negative. Negative ही होगा, है ना? So yes, R is joined with C and then double bond N MgX, one pi bond is break and followed by hydrolysis, MgX OH release हो जाएगा, NH3 release हो जाएगा and we get RCOR. Clear? Thank you, ma'am. Okay. Now next reaction. And in your aldehyde ketone exercise question, number मुझे ध्यान नहीं है, conversion reactions हैं, उन convergence very important convergence हैं, and उन convergence में आप देखोगे how will you obtain benzophenone or acetophenone in one step or in two step. अगर आपके one step और two step बोल रहे हैं, this Friedel-Crafts reaction is the very best reaction. First is benzene. How will you obtain benzene? बेंजीन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कल बताया था मैंने बेटा, फ्रॉम एनिलीन वी प्रिपेयर डाइजोनियम, देन डाइजोनियम व्हेन ट्रीटेड विद H3PO2 प्लस वाटर और C2H5OH. बिल्कुल माइंड में हाईलाइट करके रख लो इसको या कॉपी में हाईलाइट कर लो. टू फॉर्म बेंजीन, बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम
any organic compound or any aromatic compound through diazonium. When diazonium is treated with alcohol or H3PO2 and H2O, then it gives benzene. Then benzene only 2-step reaction हो जाएगी. 3-step reaction आपके उस chapter में given है. Not more than 2-step, not more than 3-step. So first aniline, nitrobenzene, reduction, aniline form diazonium. Conditions पता है. Then diazonium on heated with C2H5OH. Then it treated with CH3COCl. Then it gives acetophenol. Phenyl ethanol मैंने IPAC name भी bracket में लिखा है. And second one is benzophenol. C6H5COCH3 and benzophenol. Now these are the all reactions which are nucleophilic addition reaction. Same ये वाले steps बेटा आप अब बार-बार बोल रही हूँ. Synopsis के साथ-साथ short answer, long answers में मैंने questions दिए हैं. Plus NCERT के सारे questions solve कर लो. अभी time है. Utilize करो उसको. अगर किसी में doubt आ रहा है तो उसको mark कर लो ताकि मुझसे पूछ पाओ. ठीक है? Because tomorrow onwards मैं ये discuss अब नहीं करूँगी. Here यहाँ पे देखो बेटा. Same charge लगा दो. Carbon is positively charged, oxygen is negatively charged, H positive charge, Cn negative charge. CnOH, cyanohydrin is formed. Cyanohydrin Cn present है. That is on hydrolysis it gives OH. Now, confused हो जाते हो आप लोग. How will you obtain 2-hydroxy propanoic acid? Note down. मैं conversion बता रही हूँ बेटा आप लोगों को. 2-hydroxy propanoic acid from suitable carbonyl compound. तो आप suitable which suitable carbonyl compound you take? Acetaldehyde लोगे because Cn increase 1 carbon, CH3COH लिखते जाओ. मैं धीरे धीरे इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ बेटा आप लोगों से. सिर्फ मुझे 2 के वीडियोस दिख रहे हैं, बाकी और किसी के वीडियो नहीं दिख रहे हैं, पर इसको लिख लो. ठीक है? चार्ज लगा लेना. C is positively charged, oxygen is negatively charged, CnOH आएगा. Then further complete hydrolysis, it gives COH. So क्या आ गया आपका 2-hydroxy propanoic acid. सुनने में कितना हार्ड लग रहा था, पर कितना इजी. only 2-step reaction है. First HCl and then followed by hydrolysis. ठीक है? मान लो सपोज ऐसा आ जाता है आपको 1 amino propanol. क्या करोगे? यहां तक तो आप सेम आओगे बेटा. OHCONH2. उसके बाद क्या करोगे? आपको एमिनो ग्रुप लाना है. सो क्या करेंगे अपन? हॉफमैन डिग्रेडेशन, Br2NaOH. सिंगल एंड सिंगल रिएक्शन है चेन डिग्रेडेशन के लिए. और भी हैं पर ये बहुत इजी है इसीलिए मैं इसको बार बार बताती हूँ. चेन डिग्रेड हो गई आपके पास, एमिनो ग्रुप आ गया. प्रोपेनॉल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रोपेनॉल क्या है अपना फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी में है. क्लियर? समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट